So students, in this lecture, we are going to solve some more stoichiometric calculation-based questions. So, moving on to the question, washing soda is hydrated sodium carbonate. So note one thing, in the AS chemistry moles questions, there is more story and equal amount of content. So washing soda is a hydrated sodium carbonate. This is just a play of words, use of words. A student wished to determine the value of X by carrying out a titration with the following results. 5.13 gram of washing soda crystals were dissolved in water and the solution was made up to 250 centimeter cube in volumetric flask. Now that's a common one. That's a common question for P3, that's a common question for P5. And in the molar calculation, you rise the volume up to this level. 25 centimeter cube of the solution reacted exactly with 35.38 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid. And carbon dioxide was produced. So हमने इस 25 centimeter cube में से we took just 25 centimeter cube, 250 में से 25, and we reacted with that one. Obviously, there will be a difference of moles, ratios, so let's see what's going to happen. Write the balanced equation for the reaction between sodium carbonate and hydrochloric acid. Complete O-level based question. So sodium carbonate plus HCl, that would give us, and देखो आपको बताया हुआ, it's hydrochloric, and carbon dioxide was produced. Like in the last question, we did in the previous lecture, the examiner mentioned about ammonia. So we know carbon dioxide is produced, and rest we are left with water and 2 moles of NaCl. So that's a balanced equation. Calculate the amount in moles of HCl in the 35.8 centimeter cube of solution. It's simple. Concentration is given to us. N equals to C into V. So concentration is 0.1. Volume is 35.8. You divide it by 1000. So that would be 0.00358 moles. Use your answer in 1 and 2 to calculate the amount in moles of sodium carbonate in the 25 centimeter cube. Now, amount in moles. So 1:2. So if I make a molar ratio between these two, it is going to be 1:2. We have calculated the moles of HCl, which is so if we crisscross, if we take a ratio, the answer would be, let me check, half of this, that would be 1.79 into 10 raised to minus 3 or 0.00179. Same thing. The calculator gave me answer in this way, so that's why I mentioned it. Use your answer 2-3 to calculate the amount in moles of sodium carbonate in 250 centimeter cube of solution. Now know one thing, it's a simple thing. अगर हमने 250 में से, we had 250 centimeter cube of a solution and we only took 25 out of it. So we would receive a lesser amount of moles. How lesser? How much lesser? We'll just make a simple ratio. Like for instance, 250 ratio 25. Sometimes we get a question of 1 dm cube, so that's 1000 centimeter cube. उस केस में 225 ratio 1000 centimeter cube. But that's a different question. So अभी हमने calculate किए 25 में. वो कह रहे calculate the amount in 250. Obviously it would be 10 times. But how? In 25 it's 0.00179. So for this value, cross multiply करते हैं. This would be 10 times higher, so 0.0179 moles. Now that's the total moles of sodium carbonate. Easy, basic calculation. Hence, calculate the mass of sodium carbonate present in 5.13 gram of washing soda. आपके पास
मोल्स भी आ गए। वो कह रहे mass of sodium carbonate present in 5.13 ग्राम of soda crystals। अब उसमें सोडियम कार्बोनेट किस तरह? This here the examiner is talking about the whole crystal, बट हमने क्रिस्टल की बात नहीं, हमने ऊपर क्रिस्टल में से सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू फाइंड की है, राइट? सो एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 513 ग्राम। सो हमने सबसे पहले मास निकाल ले। हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट? अगेन सिंपल फॉर्मूला, मास ओवर mr। सो मोल्स हमारे पास गिवन है, हमने कैलकुलेट किए 0.0179 equals to mass which we have to find multiplied by mr। So how would we calculate the mr? Simple, 23 into 2 plus 12 plus 48, that's 60, 46, so that would make it 106. So 106. So 106 into 0.0179, let me see, 1.897 grams. That's the mass of sodium carbonate here. That is not the mass of the whole crystal. Because why? हमने सिर्फ अभी सोडियम कार्बोनेट को फाइंड किया, वी हैवंट फाउंड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हमने बट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, बट यहाँ पे पूरे क्रिस्टल की बात की है उसने। द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द होल क्रिस्टल हियर। सो द टोटल मास ऑफ द क्रिस्टल इज 5.13। सो मास ऑफ Na2CO3 in crystal 5.13 minus 1.897, and that would be a basic answer of 5.13 minus 1.897, that's 3.233 grams. Now, अगर आपको सिंपली पता है कि ये मास सोडियम कार्बोनेट का है, so the leftover mass is that of water, वो पानी का mass। So, how to calculate the value of x? You can calculate through molar ratio, but this is the mass of water. So how would you calculate the moles of water? N equals to mass over mr. So this divided by 1/8. Because water's mr is 18. 0.179. Up, we have to make a ratio out there. Because now in order to find the value of x, this is like an empirical formula. Na2CO3 ratio water. We have the moles of water which is 1.179. We also found the moles of sodium hydroxide. That's an exact value. So what do? We divide it with the shortest value, smallest value, this. This becomes 1:10. Hence, x equals to 10. And the whole compound is sodium carbonate decahydrate, 10 waters. So that is one basic question of water crystallization, जो हम किस में परफॉर्म करते हैं?
We perform this calculation in crucible. I have covered this concept in my P3 video lecture. You can see that how I told the students that how do we take the values from crucible. Now let's move on to the next question. Compounds of phosphorus have many uses in daily life. Fertilizers, matches, and in water softeners, as I told you. आगे की बात हो रही. State the full electronic configuration of phosphorus. Now, phosphorus के case में, if we look at the periodic table, phosphorus is 29. This is something we have discussed in the previous lecture. So by now you should know about it. If you don't, it's a basic one. So 1s2, 2s2, 2p6. Now we have covered 10 electrons. 3s2, oh, sorry, that's its mass. That's 15. 3s2 and 3p3. Nitrogen और इसके नीचे phosphorus, half p orbital, half p subshell. So that's a basic one. Phosphoric acid H3PO4 is used in the manufacture of phosphate fertilizers. Reduce the oxidation number of phosphorus in H3PO4. That is a concept of O levels as well, and that is something we have discussed in the lecture of redox or electrochemistry in AS. How to calculate the oxidation number of phosphorus? H3PO4. अब हमें पता है पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0. There is no charge on the compound. Hydrogen has a +1 charge, that is certain. How many hydrogens do we have? 3. Plus phosphorus is unknown to us. Plus oxygen has a -2 charge. So 4 into -2 equals to 0. So phosphorus plus 3 minus 8. That's one thing. करते करते P -5 equals to 0 and P becomes +5. So the oxidation state of phosphorus is +5. It's a basic calculation. Have a look here. Hydrogen की oxidation state is always +1, oxygen की -2. We just multiply them with the values. Phosphorus is unknown. There is no charge on the compound, so it's 0. The salt sodium phosphate is a water softening agent. The salt sodium phosphate is a water softening agent. Write an equation for the complete neutralization between phosphoric acid and sodium hydroxide. उसने आपको सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी दे दी, so that you don't get troubled in these basic concepts. So sodium hydroxide plus phosphoric acid, जिसका फॉर्मूला ऊपर given है, will make sodium phosphate plus water. Now we balance the equation, 3 of these and 6 hydrogen, so 3 of these. अगर आपको सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला नहीं भी आता, how to make that? Sodium is +1, phosphate is -3, crisscross the values, and that is what you get here. Sodium phosphate was prepared from 50 centimeter cube of 0.5 mole per dm cube phosphoric acid and excess of sodium hydroxide. How many moles of phosphoric acid were used? N H3PO4 C into V. This is 0.5. This is 50 divided by 1000. So 0.5 into 0.05. That's how much? 25. I don't want to get confused in the calculation. Bilkul. 0.025 mole. Calculation is there. Use your equation in C1 to calculate how many moles of sodium hydroxide are required. If we have the moles of H3PO4, simple molar ratio,
1:3, 1 moles of phosphoric acid, and हमें phosphoric का पता लग गया. We cross multiply and we get a 3 times value of 0.075 moles. Basic O-level based calculations. The only thing is to understand the concepts, understand the question. कि वो पूछ क्या रहा है. And steps are given mostly. Phosphorus sulfide is used in small amounts in the tip of a match. On striking, this compound burns. अब burning में आपको पता है it's a simple burning procedure. Combustion हो रही है. Combustion में अगर P4S3 को मैं combust कर रहा हूँ, so जैसे आप करते थे, you get both the compounds. हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता था. इसमें सल्फर ऑक्साइड बनेगा एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड. If you don't know these formulas, so don't worry. In organic chemistry, we will touch upon these topics. That what is the formula of oxide of phosphorus? What is the formula of oxide of sulfur? Now we just need to balance the equation. यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, we multiply it by 2. यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, we multiply by 3. Then we calculate the number of oxygen. 10 oxygens here, 6 oxygens here, 16. So 16 oxygens के लिए we have 8 O2 molecules. Both oxides formed in one dissolve in water to give acidic solutions. Construct an equation for reaction of each oxide with water. Again, a complete concept of inorganic chemistry. So don't worry अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा. Once you go through inorganic chemistry के topics and lectures, you will understand what's happening here. ये थोड़ा रट्टा है, इसमें concept कम है. So this can be P2O5 and there is another way, it's P4O10. तो दोनों exist करते हैं. So अब अगर हम P4O10 से भी बनाते हैं तब भी आता है. हम इसको भी P4O10 कर सकते हैं वैसे, तभी इक्वेशन हमारी सेम रहेगी. P4O10 in organic chemistry. So P4O10 को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे, so obviously a non-metal oxide in water, O levels, a non-metal oxide, an acidic oxide in water gives us an acid. Simple. Phosphorus 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो and hydrogen हो गए 4, 3, 12, 6. Sulfur dioxide, a very basic one, sulfur dioxide plus water. Trioxide होता तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता. डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरस एसिड है. बट अगेन डोंट वरी, आ गया कंसेप्ट. दैट्स इट. नाउ वी जस्ट डिस्कस दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ मोल्स and the rest of the questions we'll discuss in the next lecture. Methanoic acid, HCOOH, was formerly known as formic acid because it is present in the sting of ants, and Latin name for ant is formica. चलता जा रहा. No reason. It was first isolated in 1671 by John Ray, who collected a large number of dead ants and extracted the acid from them by distillation. No need. Just to confuse you. पढ़ लो, skip नहीं करना, पढ़ना है. In this question, you should give all the numerical answers to 2 significant figures. So be very cautious. Normally 3 होती हैं, हम 4 में भी खेलते हैं. And 2 का मतलब होता है the answer only. Not the calculations. Calculations में पूरे significant रखो, answer की बात हो रही है. At room temperature, pure methanoic acid is a liquid which is completely soluble in water. Okay. When we are stung by a typical ant, a solution of methanoic acid A is injected into our skin. Now solution A वो क्या है, दोबारा से बात करते हैं. It's of methanoic acid. It contains 50% by volume of pure methanoic acid. A typical ant contains 7.5 into 10⁻⁻⁶ dm cube of solution A. यानी एक ant के पास इस solution का ये वॉल्यूम है. And remember, इस solution में आधा methanoic acid है. See the link build करने. This has 50%,
methanoic acid, and one hand, ये arrows है, arrowheads बहुत फायदा देते हैं. One hand has this amount in it. So calculate the volume in centimeter cube of solution in one hand. अब देखो ये कैलकुलेशन इतनी कोई ट्रिकी नहीं है. सिंपल डीएम क्यूब और सीएम क्यूब की कैलकुलेशन, you just multiply it by 1000. 7.5 into 10 raised to the power minus 6 dm cube into 1000. So इसकी वैल्यू सिर्फ 10 की कम होगी. 7.5 into 10 raised to the power minus 3 centimeter cube. Basic calculation. Use your answer in A to calculate the volume in centimeter cube of pure methanoic acid in one hand. अब हमें पता लग गया कि हाफ की बात हो रही है, 50%. So we will just talk about half here. So 7.5 एक एंट के अंदर है, पर इसमें प्योर कितना है? 50%. 50 divided by 100. So half of it, that would be 3.75, I believe. Yes. So 3.75 into 10 raised to the minus 3 centimeter cube. Use your answer in 2 to calculate how many ants. Basic maths question आ रहा है कि अब how many ants would have to be distilled to produce 1 dm cube. अब 1 dm cube क्या होता है? अब इसका मतलब यह है बच्चों कि हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए. सो इसके लिए हम अगेन रेशो बनाएंगे. कैसे? कि एक एंट कितना देती है? सो 1 एंट गिव्स अस that is what we know. But हमें x नंबर ऑफ एंट्स चाहिए, हमें एंट्स चाहिए, बट x नंबर ऑफ एंट्स हमें कितना डीएम क्यूब देंगी? 1000 डीएम क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो सिंपली कैलकुलेशन है x को फाइंड करने के लिए. सो x इक्वल्स टू 1000 divided by 3.75 into 10 raised to the power minus 3. So let's calculate the value. 1000 divided by 26667. 5 है. Yes. It was a decimal value, but हम राउंड कर लेते हैं क्योंकि हम एंट्स की बात कर रहे हैं. It should be a round figure. Now, when we are stung by an ant, असल कैलकुलेशन तो अब शुरू होने लगी. Now, when we are stung by an ant, a solution of A injected in 80% of total volume of solution A. The amount of solution A is 80% of the total solution present in one ant. फिर percentage को आगे. The density of pure methanoic acid is 1 gram per centimeter cube. Calculate the volume in centimeter cube of pure methanoic acid injected in one ant sting. अब उसने कहा 80% है. तो हमें क्या पता है? ऊपर से हमने निकाला ये 375. ये है एक एंट के अंदर 3.75 into 10 raised to power minus 3 into 80 divided by 100. वही कैलकुलेशन आगे चलती जा रही है बच्चों. मल्टीप्लाई बाय 80 divided by 100. So 0.003 centimeter cube. Now that's the answer. Use your answer in 1 to calculate the mass of methanoic acid present in one ant sting. अब just convoluted complex, यहाँ से इतना ये उतना ये टाइम जस्ट आपको
माइंड प्ले. सो बी रिलैक्स्ड. मोल्स की कैलकुलेशन में हमने सांस लेना है, रिलैक्स्ड होके सॉल्व करना, कोई भागदौड़ नहीं करनी, सवाल को आराम से समझना. यूज योर आंसर इन वन टू कैलकुलेट द मास ऑफ मेथनोइक प्रेजेंट इन वन एंड. अब उसने हमें क्या कहा, हमने मास निकालना है. मास के लिए हमारे पास है कि प्योर के अंदर ये होता है, प्योर मेथनोइक एसिड की डेंसिटी ये. सो व्हाट इज डेंसिटी? इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. सो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, D इंटू वी. डेंसिटी हमारे पास है 1.2 इंटू, इसीलिए हम सेंटीमीटर क्यूब में थे. नॉर्मली इट्स इन DM क्यूब. हम डेंसिटी कैलकुलेशंस के लिए CM क्यूब में खेल रहे थे. अगर ग्राम पर DM क्यूब होता तो हम DM क्यूब पे करते. सो सेम यूनिट, so 0.003. So the final answer would be 3.6 into 10 raised to 4, इतना ही रहेगा. यहाँ पे 0.0036. Same बात है. That's the gram. Now wrapping up this question with the last one. Bees also sting us by using methanoic acid. One simple treatment for ant bees, use sodium hydrogen carbonate. अब एक नई चीज आ गई. Construct a balanced equation for the reaction between methanoic acid and sodium hydrogen carbonate. Methanoic acid का फॉर्मूला आपके पास गिवन है. आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोबारा पढ़ेंगे, बट ये ओ लेवल्स में आप पढ़ चुके हैं. सो वी नो कि जो हमारा एसिड है, इट्स एन एसिड दैट रिएक्ट्स विद hydrogen carbonate. It will give us carbon dioxide, it will give us water, and इसी का H acid loses hydrogen, right? So HCOONA. हाइड्रोजन कार्बोनेट वही कार्बोनेट वाली चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है. एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम थिंग. सो दैट्स द इक्वेशन. Is it balanced? H1, bilkul. Yes. In a typical bee sting, the mass of methanoic acid injected is this gram, 5.4 into 10 raised to the minus 3 gram. Calculate the mass of sodium hydrogen carbonate needed to neutralize the bee sting. अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, हमारे पास, हम दोनों की बात करेंगे, हम रेशियो बनाएंगे दोनों. We need to make a ratio out of it. The mass of methanoic acid injected is this. Calculate the mass of sodium carbonate. So अगर हमारे पास एसिड का मास ये है, एसिड ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका रेशियो पे बात करेंगे. और वो कैसे करेंगे? We need to find their molar masses. Mass of 1 mole. So that हम mass over MR करके इनके मोल्स निकाले. हमारे पास अगर देखो मास गिवन है मेथनोइक एसिड का 0.054 ग्राम्स, सॉरी एक और जीरो होगा. सो हमने सिंपली मोलर रेशियो बनानी है इनकी. सो वील जस्ट हैव इसके मोल्स 1 + 12 + 32 + 1 40 44 46. सो 46 आप मैस ओवर एमआर करके भी मोल्स की रेशियो बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो. सो आपने ये वॉल्यूम किया, मतलब ये एमआर लिया, यू कैन डू मैस ओवर एमआर और यू कैन जस्ट डू सिंपल रेशियो. दैट्स ऑल्सो अ वैलिड वे टू फाइंड द आंसर. NaHCO3 23 + 1 + 12 + 48 24 36 + 48 84. सो 84 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मोल्स भी कर सकते हो, मोलर रेशियो भी अलाउड है. कितने मोल इसके, इतने मोल तो इसके. एक्चुअली मोल्स निकाल रहे हैं आप, सिंपली मोल से भी कर से दोबारा से मैथ निकालना पड़ता है ना. एक्चुअली अगर मैं मोल्स निकालूँ फिर मोलर रेशियो बनाऊँ फिर दोबारा से मैथ करूँ तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ. सो द आंसर हियर वुड बी 0.0054 into 84. So mass is 0.009
86. वेट अ सेकेंड, अब मुझे एक चीज याद आती है. क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये भी 2 है, ये 2 नहीं है. सो इसको हम 38 कर देंगे. ये 2 नहीं है, इसको हम 2 कैसे करेंगे? 2.6 इंटू 10⁵ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 2 कैसे करेंगे? 3.0 इंटू 10⁻³ यहां पे ये वैल्यू ठीक है. एंड द फाइनल आंसर शुड नॉट बी दिस, इट शुड बी 9.9 इंटू 10⁻³ because 2 significant figures were important. So that's a common mistake to take place. अगर वो आंसर्स होते सब गलत हो जाते. So in the next lecture we are going to talk about the other questions of this worksheet. So play the next lecture. Thank you so much.